Welcome students, this is my new video of class 7th and your chapter is chapter 8 conditional statements in Python, and today's topic is given on your book page number 114 and 115, applying conditions in a program. In a computer programming, the word conditions refers to a relational expressions that can be evaluated to either true or false. Okay, so when the computer evaluates a condition as true, the control of execution is transferred to the one group of statements, and if the condition evaluates to false, the control is transferred to an alternate group of the statements. Like that picture, here is a start and here is statements and condition is there. If condition is true, then we have to move on that right hand side and this blocks of statements will be executed, and if the condition is false, then we have to move on that left hand side and this block statement blocks will be executed. Okay, so that is the applying conditions statements. So how we can applying a condition statements? So there are various condition statements in Python, like if else, if else are used to include conditions in the program. These are called conditional statements. So if you provide a condition, then after that condition there are two ways: if condition is true and if condition is false. If condition is true, then you have to move, control will transfer to the one group of statements, and if condition is false, then control will transfer to the another group of statements. So conditional statements in Python allows to apply conditions in a program by using the conditional statements. The conditional statements used in Python are as follows: if else and if else. What is if? It consists of boolean expression if result is either true or false, followed by one or more statements. The action is taken when condition is met, otherwise nothing happens. In this if statements, only if condition is true, मीन्स इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक है. अगर कंडीशन ट्रू होगा तो सिर्फ ट्रू वाला पार्ट रन करेगा. उस समय अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक हम इसमें नहीं लिखते हैं. ठीक है. इफ एल्स, इसमें if else and if condition, it contains a boolean expression. The if statement is followed by an optional else statement, and if the expression result is false, then the else statements get executed. How? I will show you. If statement, if, and if here I write any condition, if I write here any condition, so the statements will executed. Okay, तो दिस इज़ द इफ़ स्टेटमेंट. सिर्फ अगर यहाँ कंडीशन ट्रू है तब ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो इसमें कुछ नहीं होगा. लेकिन जो सेकंड स्टेप है जिसमें इफ़ और एल्स लिखते हैं, इफ़ के साथ हमने यहाँ कंडीशन दी, ओके, एंड द कंडीशन इज ट्रू, देन द इफ़ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स, देन द एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन इफ में यहाँ पे कोई कंडीशन दी जा रही है, दैट कंडीशन विल ट्रू, देन द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स, then the else block will be executed. And if else, we can implement if statements and or if else statements inside another if or if else statement. The if else statements provide a method to perform multiple tests on a conditions. And if third statement is that if, अब इसके अंदर हमने यहाँ कंडीशन लिखी, ओके, एंड हियर यू another if, फिर से कंडीशन हम लिखेंगे इसके अंदर, ओके, एंड देन इस इफ़ का एल्स होगा, ओके, एंड फिर इस इफ़ का भी एल्स. फिर ये इफ़ यहाँ बंद करेंगे, फिर एल्स लिखेंगे. मीन्स इफ़ के अंदर भी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं, या एल्स के अंदर भी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ इफ़ एल्स, and this is the multiple test conditions on that. Okay, so now we have to explain the if statement. The if statement is used to control the order of execution of the statements such that the intended statements included within the block will be executed only if the condition stated with the if keyword becomes true. Otherwise the control execution will skip if block and jump to the next statements, if any. The general syntax is that if condition and intended. How? I will show you example. Marks, enter your percentage. Now here if के साथ हमने यहाँ कंडीशन लिखी क्या, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60. इफ़ यू इंटर एनी मार्क्स एंड दैट इज greater than or equal to 60, then the message will be printed, you have got first division. Okay, तो दैट इज़ इफ़. अगर ये इफ़ के साथ ये कंडीशन ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाउ, लुक, इंटर योर परसेंटेज मार्क्स 67 यहाँ हमने दिया, देन यू हैव अ
गॉट फर्स्ट डिवीज़न एंड देन यू शुड वर्क हार्ड, ये भी आ रहा है, दोनों मैसेज आ रहा है। अगर हमने यहाँ 55 दे दिया देन only message came you should work hard, means that condition, that print statement will not be executed. Why? Because if you provide a value that false the conditions, then this block, this statement will not be executed. ये वाला स्टेटमेंट तो हमेशा रन करेगा चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट इस इफ से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट्स है जो इसमें लिखा हुआ है। बट इफ़ यू given any condition here and give the value, and if the value false the conditions or true the conditions, if the value true the conditions, then this statement also be printed and this also be printed. Okay, if the value false the condition, then only that statement will printed. Run the program twice. Okay, notice that the first case when the condition is true, then you have got that both messages will be printed, and once time when the condition is false only, and in case false the if block statement is skipped and control of the execution passes on the last statement. जब condition false हो रहा है तो ये जो if block है इसको skip कर दे रहा है, इस पे execution नहीं हो रहा है, जो आपका last statement है वो execute हो रहा है। Okay, the if else statement, the if else statement is used to execute one out of two alternate blocks of statements if the conditions given with if keyword evaluates to true, the if statements will be executed, otherwise the statements given in the else block will be executed. How? If condition and then the condition, these statements are related to if, and else these statements are related to else block. If the condition evaluates to true, only the intended statement 1 will be executed, and if the condition evaluates to false, only the intended statements 2 will be executed. Each statement block can contain any number of statements. So practically I will show you. Write a program to compare two numbers and print the bigger one. So first enter the first number will be entered into A, and input enter the second number will be entered into B. A और B में values दी गई हैं. Here I will write a condition if A greater than B. So if that condition will true, then the message will print the bigger number is A. If the condition is false, then else the bigger number is B. So how? Enter the first number. It is given 152 to A, and enter the second number 256 given to B. Now check A greater than B. So here A is 152 and B is 256. So according to the value the condition is false. Then the bigger number is, then if it is false, then the else block will be executed. अब यहाँ पे condition false हो रही, क्यों? क्योंकि A की value 152 है और B की value 256 है. तो if condition is false, then output will be printed the bigger number is B. Okay, means 256. Another example, if I return a number 1036 to A and 954 to B, then the bigger number is A. Here is condition is true, then the output will be printed the first statement, the bigger number is A. Okay students, if you want to check the even and odd number, then another example, you have to provide any number and num modulus 2, you can divide the number by 2, and if the modulus means remainder, यहाँ पे हम कोई भी नंबर देंगे उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है that means the number is even, else the number is odd. So enter a number 36 is here. Now 36 divided by 2, it will remainder will 0, then the number is even. If another example, if you write 51, then the number is odd, then you have to message will printed the number is odd, because here remainder is 0 not. Okay, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल इफ एल्स. ओके, यहाँ पे आप कोई कंडीशन देंगे, ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट्स आएगा, फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट आएगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ एलिफ है, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, इफ एलिफ 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 एल्स, मल्टीपल टू चेक नंबर इज पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव. तो नंबर यहाँ हमने लिया, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर, नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि ज़ीरो है कि निगेटिव है. कोई भी नंबर यूज़र ने दिया यहाँ पे, नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो, यू इंटर अ पॉजिटिव नंबर. एल्स मान लिया अगर नंबर ज़ीरो नहीं है, देन एलिफ नंबर अगर ज़ीरो है, देन यू इंटर अ ज़ीरो, एल्स यू इंटर अ निगेटिव नंबर. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो
here I type 65, then the condition is true, number is greater than 0, then you enter a positive number. यानी यहाँ 3 conditions दिए गए हैं. ओके, आप जो वैल्यू अगर हमने 0 दिया, then that if I provided number to 0, अगर ये NUM जो वेरिएबल है इसको हम 0 देते हैं, then number is greater than 0, condition false, then this statement is true, you entered a 0. If I write any negative number -3, then that is false. -3 is greater than 0, condition false. -3 equal to 0, condition false. Now else you enter a negative number. Okay, so this is the output will be printed. Okay students, I will provide that practical activity and theoretical activity of this page number 117 activity written. Okay, written मैं ये लिख के आपको भेजूंगा, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे. This is very important for your exam. Okay students, thank you, have a nice day.